Assalamu alaikum, dear students and viewers. Today we are going to discuss the lecture number 6 of gravitation, that is the variation of acceleration due to gravity with the altitude. We know that every substance which is falling freely at the surface of earth under the effect of gravity, that is having acceleration equal to acceleration due to gravity, that's 9.8 meter per second square. G is equal to 9.8 meter per second square at the surface of earth. But this value of G is constant at the surface of earth, and when we move above the surface of earth, its value changes. There is variation in the value of G. When we move towards the center of earth from the surface of earth, its value gets changed. When we go from poles to equator, its value changes. And because of rotation of the earth, its value gets changed. There are four factors by which value of G is changing, which can change the value of G, which are changing the value of G. That's height or altitude from the surface of earth. That's depth from the surface of earth. That's while going from poles to equator or equator to poles, and because of rotation of the earth. All the factors we have to discuss one by one. Now today we are going to discuss what will happen to the value of G when we move above the surface of earth, and how we can say how much percentage the value of G decreases with the height. That's our question today, and we are going to derive the expression by which we can calculate, which we can apply to calculate the variation value of G, decreased amount of value of G, or percentage decrease in the value of G when we move above the surface of earth. Now here we consider earth to be the spherical surface of radius r and mass m. हम अर्थ को स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जिसका रेडियस r है 6,400 किलोमीटर, एंड जिसका मास m है दैट्स अबाउट 5.98 into 10 power 24 kg. तो ये भी हम बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यूज. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल गो टू द डेरिवेशन. इससे पहले लेक्चर नंबर 5 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका नाम ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑलरेडी जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देखिए. तो उसमें हमने ये डिराइव किया था कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी at the surface of earth is G is equal to Gm divided by R square. This is equation first. So we know ये हमने पहले ही डिराइव किया, G is equal to Gm divided by R square. अब इसके बाद हम पॉइंट A पर देखते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट A है ये ऑलरेडी सरफेस से h डिस्टेंस पर है. अगर हम टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ से देखेंगे तो ये डिस्टेंस r प्लस h आ जाती है. तो नाउ GH, the value of G at point A, we know A is at a distance h from the surface, so GH जिसको हमने लिखा, that will be Gm divided by R plus h whole square. This is equation second. So dividing equation second by first, dividing equation second by equation first, we get, तो यहाँ पर GH divided by G, that will be equal to Gm divided by R plus h whole square divided by Gm divided by R square, or in other words GH divided by G, that is Gm divided by R plus h whole square into R square divided by Gm. तो R square, ये R square ऐसे ही रहेगा, Gm and Gm cancel. So we are here, we have
we have GH divided by GM. G is equal to R square divided by R plus H whole square. या हम लिखेंगे GH डिवाइड बाई G इज इक्वल टू, तो ये R स्क्वायर हम ऐसे ही रखेंगे और ये जो R है इसमें से R प्लस H होल स्क्वायर, R स्क्वायर बाहर, 1 प्लस H डिवाइड बाई R होल स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर कैंसल, तो GH इज इक्वल टू, ये G ऊपर जाएगा तो G इंटू 1 प्लस H डिवाइड बाई R whole square. So this formula is used to calculate the value of G, the variation in the value of G. So you can stop it here or you can use here binomial theorem or you can bring it in the numerator. So हम ये भी कह सकते हैं GH is equal to G into 1 minus H divided by R this power minus 2, because इसको numerator में लगाया तो पावर नेगेटिव बन गया। अब यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो यहां पर हम ये फार्मूला अप टू 2 टर्म्स लगाएंगे तो GH विल बी इक्वल टू G इंटू 1 माइनस ये 2 नीचे 2H डिवाइड बाई R, तो ये माइनस ये प्लस है, दिस इज प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस 2 का माइनस प्लस माइनस माइनस बन गया 2H डिवाइड बाई R, 1 प्लस n x, n की जगह माइनस 2 और x की जगह h डिवाइड बाई R, तो बाकी टर्म्स हमने नेग्लेक्ट की। तो दिस फार्मूला गिव्स द वैल्यू ऑफ G, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G विद द हाइट, with the altitude. This is very important. So that means GH is equal to G into 1 होगा, G minus this term. So 1 minus this term, this means value of acceleration due to gravity will decrease when we will move above the surface of Earth. When we move up with above the surface of, जब हम surface से ऊपर जाएंगे तो the value of G decreases. So आपने ये नोट करके रखा होगा। तो how much value will decrease? तो यहां पर हम देखेंगे GH इज इक्वल टू G माइनस 2 GH डिवाइड बाई R, तो इतना वाला टर्म इसको माइनस होता है, यानी ये 2GH डिवाइड बाई R इतना माइन डिक्रीज होता है। तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये वाली टर्म हम यहां ले गए G माइनस GH, दैट इज 2H डिवाइड बाई 2HG डिवाइड बाई R, दिस इज अमाउंट ऑफ डिक्रीज। How much value of G decrease with the height? That's 2Hg divided by R. Now second is fractional decrease. That is G minus GH divided by G is 2H divided by R. This is the fractional decrease. And इसके बाद आएगा percentage decrease. In percentage decrease in the value of G, that is G minus GH divided by G into 100, that's 2H divided by R into 100. This is the percentage decrease in the value of G. This is how we can calculate the variation in the value of G with the height. This is all about today's lecture. Tomorrow we will discuss the variation with the depth and we will do some numericals on this. So stay connected and subscribe the channel.